Hello everyone, I am Sreekanya madam. I hope you are having a very nice day. So before going to this video, so don't forget to like, share and subscribe our channel Master Q. तो आपण मैंने मोर प्रथम वीडियो रे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज विषय जानी थिले। आजिर टॉपिक हमर रहउचे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो फ्रेंड्स आमे फास्ट देखिबा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन। तो आपण मैंने एमएस विंडोज जानी जो मैंने कंप्यूटर बा लैपटॉप यूज करुथिबे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आमे बेसिकली यूज करछे सेटा होचे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो Microsoft Windows is a group of several proprietary graphical operating system families, all of which are developed and marketed by Microsoft. Each family caters to a certain sector of computing industry. So, this Microsoft Windows operating system belongs to the company of Microsoft. तो आपण माने जानी थिबे Microsoft होचे सबुठर बहुत बड़ा कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ए कंपनी को बिलोंग करछे हमरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। So with the examination point of view, there are quite a lot of government exam which include computer awareness as a part of their syllabus, and MS Windows is an important topic from that prospect. जेमिति कि आपण मानक मु कहिथिली आमे जेहा भी एग्जाम दोचे तो सेथि पे हमर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज दरकार होचे। आमे जो एग्जाम दबा आमे जो GUI यूज करिबा सेटा बेसिकली हमर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहिबो। सो बाय डेफिनेशन an operating system is a group of several GUI. So आसंता आगे आमे जानिबा GUI जहार फुल फॉर्म होचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट डज इट मीन या माने कौन। तो आमे जो इन्वॉल्वमेंट आमर आ कंप्यूटर भितर जो इंटरैक्शन रोचे आमे कंप्यूटर को जो भली भाबे तार ग्राफिक्स बा आइकन सहित आमे कम्युनिकेशन करूचे सेटा को आमे कहबा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल GUIs families, all of which are developed and sold by Microsoft. तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा आमे ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करछे। The latest version of Microsoft operating system which is widely used across the world is Windows 10. तो आमे मुख्यतः Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आजिकली यूज करूचे। ताठू अधिक वर्जन भी बाहरी सरची बट आमे लेटेस्ट वर्जन Windows 10 को मेजॉरिटी यूज करूचे। सो चलन तो आमे देखिबा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ विंडोज। तो Windows 10 तो एबे ही हैला, ता पूर्वरु तो Windows 10 नथिला। विंडोज ता को वर्जन रे आम पाखरे आसी पहुंची जी चलंतु आमे जानि नबा। So it was 1983 when work on interface manager was started by Microsoft, but it was in November 1995 when the first Windows 1.0 was introduced. तो 1983 रे आमे फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्जन रो बा विंडोज वर्जन 1.0 इंट्रोड्यूस करा गला। लेटर ऑन विथ डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट कीप रिलीजिंग रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 1.0 रे आमे जो GUI बा इंटरफेस जो आइकन्स आमे यूज करतले जो भले हमर कंप्यूटर डेस्कटॉप थिला तो सेटा धीरे धीरे जेहेतु पॉपुलर होबा को लागला तार किछि डिसएडवांटेज थिला धीरे धीरे ताको आमे आउटकम कले। वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एबे चलन देखिबा विंडोज रो मुख्यतः वर्जन सब कोन थिला जोटा कि धीरे धीरे रिवॉल्यूट हे कि विंडोज 10 रे आसी कि पहुंची जे। So let us understand the different version of Windows operating system along with the features of them individually. So as I said, Windows 1.0. Windows 1.0 रे आमर रही थिला simple graphics बहुत simple थिला। It was released on November 20, 1985. Pure operating environment, used graphical user interface and offered multitasking was expected to have better future potential. तो किछि आउटकमिंग थिला, स्लो थिला, स्टोरेज कम थिला। तो जेहेतु आमे सेटा भलो से यूज कले तो तार डिमांड बढ़िला आ आमे सेतरे किछि चेंजेस चाहिए।
तापरे चलतु जिबा आमे विंडोज 2.0 इट वाज रिलीज्ड ऑन डिसेंबर 9 1987 16-bit graphic user interface based operating environment, introduced control panel and the first version of MS Word and Excel. तो आपण माने जानि थिबे MS Word and Excel. MS Word रे आमे डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, Excel रे आमे Excel शीट बनाए. Unlike Windows 1.0, it had the capacity to allow application to overlap each other. तो आमे मिनिमाइज करिकी आमे गोटे गोटे विंडोज मिनिमाइज करिकी धीरे धीरे काम करि पारले. It was also the last Windows operating system which did not require a hard disk. तो एटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम थिला जोथरे कि हार्ड डिस्क दरकार नथला. तो आपण मन को कहि रखुची हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस. तो विंडोज 2.0 पर्यंत हार्ड डिस्क रो किछि आवश्यकता नथिला. हार्डवेयर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. तो आपण माने जानि थिबे कंप्यूटर माने हार्डवेयर और हार्डवेयर होची फिजिकल एंटिटीज. तो हार्डवेयर रो आवश्यकता रही. नेक्स्ट वी विल मूव टू विंडोज 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम रो कौन फीचर्स थिला आसंतु देखिबा. इट वाज रिलीज्ड इन 1990. इट वाज बेटर एट मल्टीटास्किंग. सेम टाइम रे हमें बहुत गुडे टास्क परफॉर्म करि परिबा. यूज्ड 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो माइक्रो प्रोसेसर रो बहुत गुडे कैटेगोरीज थाए 8085 8086. तो सेटा हमें आउ गोटे क्लास रे केबे मु आपन को कहिबी. इट हैज बोथ कन्वेंशनल एंड एक्सटेंडेबल मेमोरी. तो एथरे हमें मेमोरी कैपेसिटी हमें बढ़ाई पारले. फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज टू गैदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेटर मेमोरी एंड स्टोरेज. तो धीरे धीरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रे हमर स्टोरेज और मेमोरी गैदर बेटर थिला. तो ये आपण मन गोटे कथा कहिबी. नॉन ऑफ द एबव मेंशन्ड विंडोज वाज ऑपरेटिंग सिस्टम. They all came under the category of Windows working based on a graphical operating environment. तो ए गुडा को आमे probably पूरा complete operating system कहि परिबानी. just गोटे GUI interface थिला. It was Windows 95 which was the first operating system released by Microsoft. तो जोटा सक्सेसफुली आमे प्रॉपर्ली पसंद कले यूज करि पाले सेटा थिला Windows 95. सो इफ यू आर एंजॉयिंग द क्लास, जदि आपन को क्लास टी पसंद लगुची बुझी पारचंती आ लगुची कि आपन पई बहुत आवश्यक, देन ए सेशन टाकू बा ए चैनल टाकू सब्सक्राइब करबा को आपन भूलंतु नै. तो विंडोज 95 कोन पई हमें पसंद कले. तो सेतरे कोन फीचर्स भलो रही थिला देखंतु. इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वाज रिलीज्ड ऑन अगस्त 15 1995. इट मर्ज MS DOS एंड विंडोज प्रोडक्ट. तो MS DOS, तो MS जोठी भी आपण माने पाइबे दैट रेफर्स टू माइक्रोसॉफ्ट. तो MS DOS इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम and with Windows product. It simplified plug and play feature. Taskbar and start menu was introduced. तो फ्रेंड्स एबे आपण माने जो स्टार्ट मेनू देखुचंती बा टास्क बार जोटा कि आपणकर डेस्कटॉप रो पूरा तळे थाए, दैट इज अ हॉराइजॉन्टल बार. तो से गुडा को ए विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम रे रिलीज करवाला. एडवांस फ्रॉम 16-bit GUI टू 32 GUI. तो प्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम थिला सेटा 16-bit थिला. यार मेमोरी बा यार माइक्रो प्रोसेसर स्पीड बढ़ा जाए कि 32-bit हला. लॉन्ग फाइल नेम्स कुड बी सेव. फाइल रो नेम को आमे सेव करि पारले. तो नेक्स्ट आमे जिबा विंडोज 98 95 रो आमे आसले 98 को. इट वाज रिलीज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑन May 15 1998. इट वाज ए 16-bit and 32-bit product based on MS DOS. It was not an entirely new version but just a tuned up version to Windows 95. तो एटा completely नुआ version नथिला, टिके ही modify करा हला Windows 95 को. Internet Explorer 4.01 was released. तो आपण माने जानथिबे आमे Internet Explorer इंटरनेट को यूज करिया पई यूज करे. तो एथरे हमरो Internet Explorer 4.01 को रिलीज करा गला. It did not support USB printers or mass storage. तो ये वर्सन में USB printers हमें printers यूज कर पारलेनी, storage device को भी यूज करी पारु नथिले. The next हमें जिबा Windows 2000 operating system को. It was officially released on February 17 2000.
However, its manufacturing had begun in late 1999. A core set of features was followed for manufacturing Windows 2000, but 4 different editions targeting different sectors of the market were released. These included server, professional, advanced server and data center server. तो फ्रेंड्स एथरे आमे कहला आमे जो विंडोज 2000 आम रिलीज करागला यार 4टा एडिशन रिलीज करागला जोटा कि थिला सर्वर, प्रोफेशनल, एडवांस सर्वर एंड डाटा सेंटर सर्वर. It was considered as one of the most secure operating system ever. A local disk manager were introduced with this Windows. गोटे local disk को हमें introduce करले. Then जिबा हमें Windows XP. Windows XP बहुत familiar operating system. तो यार features कौन थिला? While the manufacturing started on August 24, 2001, the official product was released on October 25, 2001. It is have advanced portable PC support, automatic wireless connection support, fast startup, better graphical user interface, help and support center. तो एठी आपण जमा भी आपण वरीड हेबेनी काहेकि जहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे मॉडिफाई हेकी गला जस्ट तार अल्प किसी डेवलपमेंट करागला तार GUI रे आम जोटा कहूँ इंटरफेस रे डेवलपमेंट करागला, मेमोरी स्टोरेज रे डेवलपमेंट करागला, माइक्रो प्रोसेसर रे डेवलपमेंट करागला. देन विंडोज विस्ता एटा भी आपण माने प्राइस सुनी थिबे एटा भी फैमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इट वाज रिलीज्ड on January 30, 2007. It had an upgraded version of graphical user interface. It was the first operating system to use DVD-ROM for installation. तो ये operating system रे हमें जहाँ भी software install करते DVD-ROM help रे हमें करूथिले. Then comes to Windows 7. The Windows 7 operating system was released on October 22, 2009. A large number of features were introduced. Redesigned Windows Shell with an updated taskbar. Incremental upgrade to Windows line libraries were added in file management system. A few features from the past Windows were removed. Extended hardware support. Then comes to Windows 8. यार फीचर्स कौन थिला? एटा October 26, 2012 रे रिलीज हेतला. इंस्टॉल इन न्यू डिवाइसेस अलग अलग डिवाइस आम इंस्टॉल कर पार. लैपटॉप, मोबाइल फोन आपण मैंने देखिथिबे मोबाइल फोन भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जाउतला. आई होप आपण मैंने के जण भी ए मोबाइल यूज करथबा नोकिया रे ए फीचर्स ता देउतला. टैबलेट रे भी हमें यूज करले विंडोज 8. Increased integration with cloud services, Windows storage service for software distribution, task manager had been redesigned, new security features were introduced. Security feature आमरा secure हे पाला. आमे बहुत गुडे डाटा जोटा रखुचे जोटा securely आमे use करि पाले. Online application could be directly downloaded. तो आमे online रू भी आमे बहुत गुडे app को directly download करि पाले. Then comes to Windows 10. Mostly आजिकली आमे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूचे तो एटा हमरो रिलीज हला on July 29, 2015. Addresses shortcomings in user interface first introduced with Windows 8, a virtual desktop system. It had the ability to run Windows Store apps within Windows on desktop rather than in the full screen mode. Included new icon. तो हमें सब जो आइकन पाइले टाइल्स सेडा नॉर्मली हमें टाइल्स कहूचे तो सब ऐप गुड़ाक हमें टाइल्स वर्जन रे हमें देखि पारले. To reduce storage outgoings, Windows 10 automatically compresses the file size. तो नॉर्मली हमें जहाँ भी इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो जो गुड़ाक साइज बड़ थिला सेमानकर कैपेसिटी बड़ थिला ता सेटा धीरे धीरे कंप्रेस करि पारला हमरो Windows 10 operating system. So what are the different application in Windows? There are all kinds of application which are available at the Windows Store and people can easily access them and download them from their personal or professional uses. तो हमरो Windows Store रोथला जेमती हमरो Android रे Play Store रोहुची सेमती Windows Store रो बहुत गुडे apps को हमें डायरेक्टली हमें डाउनलोड करि पारले. तो Windows ऑपरेटिंग सिस्टम रे बहुत गुडे रोहुची माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज रोहुची किछि गुडा आसंतु हमें देखि नबा. वेब ब्राउजर बहुत गुडे वेब ब्राउजर हमें यूज करि पारले. गूगल,
तापरे फायरफॉक्स एगुड़ा आम यूज करें एडोब फोटोशॉप को फोटो एडिटिंग एडोब रीडर डॉक्यूमेंट पढ़ाई मेसेंजर ऐप मीडिया प्लेयर डिफरेंट मीडिया प्लेयर भी यूज करें ऑडियो एंड वीडियो चैटिंग एप्स मैप्स एंड कैलेंडर्स एंड दिस लिस्ट गो ऑन आउरी बहुत गुड़े भी आम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम रे आम यूज करें सो ये आपण मैंने गोटे कथा को नोट करनी तो आपण मानकर जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन रोची आपण एग्जामिनेशन रे सेथरे मध्य कंप्यूटर नॉलेज रो किछि क्वेश्चन आसे तो सेटा को आपण अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिवे सो द प्रिपरेशन मस्ट बी डन अकॉर्डिंगली तो भाभी थी आपण मानक वीडियोटी भल लगी तो आम विंडोज रो बहुत गुड़े एवोल्यूशन केमिति विंडोज 1 धीरे धीरे मॉडिफाई होगी विंडोज 10 है आम वीडियो माध्यम जानिले So thank you for watching. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. See you in the next class with some new practice sets. Thank you.